बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, ये सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आपकी फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आज हम CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर जो 23 to 45 लेक्चर्स के अंदर कवर है, 50 MCQs होंगे सॉल्व फाइनल टर्म्स के। तो मैंने पहले मिड टर्म के भी अपलोड किए थे, तो उससे भी आपको फायदा हुआ होगा, तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत फायदा होगा। तो लाजमी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के ऊपर CS402, CS304, MGT501, MGT301 और इसके रिलेटेड और बुक्स के भी और बेसिक क्विज़ेज जो आ रहे हैं वो भी अपलोड हुए हैं, और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के भी वीडियो अपलोड है। और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 1 है। Multi-threading is the ability to do dash things at once within the same application. Option 1 is one thing, two thing, three thing and multiple things. Multi-threading. Multi-threading is the ability to do multiple things at once within the same application. It provides finger granularity of concurrency. A thread, sometimes called an execution context or a lightweight process, is a single sequential flow control within a program. तो जो मल्टी थ्रेडिंग एबिलिटी होती है वो हमारे पास मल्टीपल थिंग्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास मल्टीपल थिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, व्हाट इज द रूल ऑफ द जेवीएम इन मल्टी थ्रेडिंग? क्वेश्चन 2 है, JVM create a new process for each Java thread. JVM directly manage and schedule threads using its internal algorithm. JVM delegates the management of thread to the operating system. JVM allows threads to take advantage of hardware and operating system advancement. तो Java thread है, Java includes built-in support for threading. All well-known operating systems these days support multi-threading. JVM transparently map Java thread to their counterparts in the operating system. OS threads. Java allows threads in Java to take advantage of hardware and operating system level advancement. It's keep track of threads and schedule them to get CPU time. Schedule may be preemptive or cooperative, so it is the job of JVM to manage different tasks of thread. तो ये जो इतनी डिटेल देने का मकसद यही होता है कि एक तो ये MCQ भी कवर हो जाए, और बाकी ये कि इसके जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक में से कुछ और भी अगर MCQ आता है तो आप उसको भी कवर कर सकें। तो इसलिए जो डिटेल दी होती है तो डिटेल को लाजमी रीड आउट किया करें, क्योंकि अगर आप ये MCQs नहीं आता तो अगर इस पैराग्राफ में से कोई और MCQs आ जाता है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है, JVM allow threads to take advantages of hardware and operating system advancement. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, what does the thread sleep method do in Java? Causes the currently executing thread to wait indefinitely. Causes the currently executing thread to wait for the specified time millisecond. Terminate the currently executing thread. Pause the execution of all thread in the applications. Sleep int time method है हमारे पास, cause the correctly executing thread to wait for the time millisecond specified. Waiting is efficient, equivalent to non-busy. The waiting thread will not occupy the processor. Threads come out of the sleep when the specified time interval expires or when interrupted by one other thread. Thread coming out of sleep may go to the running or ready state depending upon the availability of the processor. तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है ऑप्शन 2 है, causes the currently executing thread to wait for the specified time millisecond. फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही बताया हुआ है, तो ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। What communication model does HTTP protocol follow? Stateful request response communication model,
Option B है stateless request response communication model, asynchronous communication model या bidirectional communication model. वेब एप्लीकेशन हमारे पास इन जनरल वेब एप्लीकेशन इज अ पीस ऑफ कोड running at the server which facilitates a remote user connected to web server through HTTP protocol. HTTP protocol follows stateless request response communication model. Client, usually a web browser, send a request to server which send back appropriate response or error message. तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, ऑप्शन जो बी है स्टेटलेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द HTTP status code 404 indicate? The request store resource is temporarily unavailable. The request resource has been permanently removed and no longer. The server encountered an error while processing the request. The request resource is not available or cannot be found on the server. तो ये यहाँ पे 500 to 599 एरर्स नीचे हैं, ठीक है, गिवन। तो जैसा कि आपने साइड में देखा होता है कि आप कोई लैपटॉप पर साइट ओपन करती हैं तो कुछ ऐसा होता है, कुछ साइट्स ओपन नहीं होती, वो भी एरर दे देता है 404, 403, 401 या 503। तो वो एरर कौन सी होती है, नीचे एरर गिवन, इस तरह के रिलेटेड 2-3 और एरर होंगे बुक के अंदर, तो उनको भी आपने देख लेना, क्योंकि कोई भी 5-7 एरर में से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 505 जो एरर है, कोड इन दी 500 as signify an error by the server. 503 जो एरर होता है indicates that the HTTP server is temporarily overloaded and unable to handle the request. 401 जो होता है indicates that the request require HTTP authentication, and 403 indicates that access to the request resource has been denied, and 404 जो होता है indicates that the request resource is not available. तो हमारा यहाँ पे जो स्टेटस 404 है हमारा indicates that the request resource is not available. तो ऑप्शन हमारा बनता है यहाँ पे the request resource is not available or cannot be found on the server, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉर्मली वेब एप्लीकेशन और पार्टीशन इनटू डैश लेयर, फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर या बोथ। Layers and web applications. Normally, web applications are partitions into logical layers. Each layer performs a specific functionality which should not be mixed with other layers. Layers are isolated from each other to reduce coupling between them, but they provide interfaces to communicate with each other. यहाँ पे देखें पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यूजर होता है, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, बिजनेस लेयर होती है, डाटा लेयर होती है, और जो डाटा लेयर्स है ना वो डाटा सोर्स की तरफ भी जाता है, और फिर जो सर्विस होती है वो डाटा लेयर से सर्विस, और सर्विस से अगेन डाटा लेयर्स, और ये डाटा सोर्स जो होता है ये डाटा लेयर से डाटा सोर्स से डाटा लेयर्स की तरफ जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका बनता है वो लॉजिकल पी जो है ना, लॉजिकल पार्टीशन इनटू लॉजिकल लेयर्स, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कैन सर्वलेट डू इन अ वेब एप्लीकेशन? ओनली जनरेट स्टैटिक HTML पेज फॉर द क्लाइंट्स, interact with the database, dynamically generate response such as HTML page and interact with database, or read write data to from files. Option 4 है process request from the web server. What servlets can do? Servlets can do anything that a Java class can do, for example connecting with a database, reading writing data to from file, etc. Handles requests sent by the user clients and generates response dynamically. Normal HTML page
The dynamically generated content is then back to the user through a web server client. तो ऑप्शन जो हमारे पास किया था इसके अंदर डायनेमिकली जनरेट भी है, ठीक है, HTML पेज भी है, इंटरेक्ट विद डेटाबेस है, रीड राइट भी करता है, डाटा फाइल्स को सेंड भी करता है। तो ऑप्शन जो हमारे पास डी वाला ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Servlet and JSP are not part of the Dash platform. ऑप्शन 1 हमारे पास है Java 1, Java 2, ऑप्शन सी है Java 3, ऑप्शन डी है Java 4। Set the class path variable. Since servlets and JSP are not part of the Java 2 platform standard editions, you have to identify the servlet classes to the compiler. The server already knows about the servlet classes, but the compilers Java you use for compiling source file of servlet does not. So if you don't set your class path, any attempt to compile servlet tag libraries or other classes that use the servlet API will fall with error messages about unknown classes. तो ऑप्शन हमारे पास जिसका बनता है are not part of the Java 2 platform. बी जो है Java 2 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9। Mostly used to deploy web application is the form dash. Unpack, pack, both. Standard directory structure of a J2EE web applications. A web application is defined as a hierarchy of directories and files in a standard layout. Such hierarchies can be used in two forms. Unpack, where each directory files exist in the file system separately, used mostly during development. Pack, known as a web archive WAR file, mostly used to deploy web application। तो हमारा जो मोस्टली यूज टू डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन होता है वो मोस्टली यूज टू डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन पैक होता है। जैसे कि हमने कोई फाइल सेंड करनी होती है ना, हमारे पास 4-5 चीज़ें होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो 10 पिक्चर्स होती हैं या कुछ फोल्डर्स होते हैं, तो हम उसको कहते हैं यार इसको सेंड कर दो। तो हम क्या करते हैं, उनको वेब आर्चिव कर देते हैं, WAR फाइल्स बना देते हैं, ठीक है, उसकी आर्चिव कर देते हैं, ठीक है, जिप बना देते हैं। जैसे हम असाइनमेंट होती है उसको हम 2 फाइल्स को इकट्ठा करके जिप करके हम उसको सेंड करते हैं, फिर उसका ना साइज बहुत कम हो जाता है। जब फोल्डर्स दोनों को हम जिप करते हैं साइज कम हो जाता है, फाइल्स इकट्ठी हो जाती है, जिप फाइल्स के अंदर हम उसको टैग बना के हम उसको मोस्टली यूज करते हैं डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन के लिए। तो पैक इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा सा वेट कर रहा है, इसकी आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा पता नहीं क्या सीन चल रहा है। ऑप्शन intended for use with the web server listening the spotted option, true है या false है। Types of HTTP request. HTTP support different types of requests to be sent over to server. Each request has some specific purpose. The most important ones are GET post. GET request a page from the server. This is the normal request used when browsing web page. Post है, this request is used to pass information to the server. Its most common use is with HTML forms. Put है, used to put a new web page on the server है। Delete है, used to delete a web page from the server। Option है, intended for use with the web server listening the spotted option। Trace है, used to trace server। तो ये आपके पास कितने 1, 2 और 4 6 ऑप्शन हैं, तो इनको लाजमी आपने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बनता है इंटेंट फॉर यूज वेब सर्वर, तो ऑप्शन जो हमारे पास इंटेंटेड फॉर यूज विद द वेब सर्वर लिसनिंग टू सपोर्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, ये इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। A servlet passes through the dash stages in its life.
1, 2, 3 and 4. A servlet passes through the following stages in its life: initialize, service, destroy. तो ये यहाँ पे इमेज भी गिवन है, सर्वलेट इनिशियलाइजेशन है, लोड रिसोर्स होता है, ठीक है। फिर सर्विस एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है, इधर से रिक्वेस्ट जाती है सर्विस एक्सेप्ट की तरफ, फिर जो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट होती है उधर से रिस्पॉन्स भी आता है, और फिर उससे आगे डिस्ट्रक्शन अनलोड रिसोर्स होता है। ओके, ये इसकी तीन फॉर्म्स हैं, इनिशियलाइज, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। स्टार्ट होता है, फिर सर्विस चलती है, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन जो सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी लाजमी क्या करें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आए तब तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन हमारे पास है 12 है। What is the purpose of the service method in a servlet? It initializes the servlet and sets up any required resource. It processes the client request and generates a response. It handles exceptions and errors that may occur during servlet execution. It destroys the servlet and releases any allocated resource. Service. The service method is the engines of the servlet which actually process the client request on every request from the client. The server spams a new threads and calls the services method as shown in the figure below. This makes it more efficient as compared to the technology that use single thread to respond to request. Destroy. The web servers may decide to remove a precisely loaded servlet instance, perhaps because it is explicitly asked to do so by the server administrator, or perhaps servlet container shuts down or the servlet is idle for a long टाइम होगा। आई थिंक यहाँ पे नहीं आया यहाँ पे शायद, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बनता है इट प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The dash servlet has an object called servlet config. 2 servlet है, 3 servlet है, 5 है या every servlet config. Every servlet has an object called servlet config associated with it as shown figure below. It contains relevant information about the servlet likes initializations parameters defined in web.xml. तो सर्वलेट है, सर्वलेट कॉन्फ़िग है, इंट है, पैरामीटर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बनता है, ये चारों इसके अंदर आ जाती हैं चीजें, तो एवरी सर्वलेट हमारा इसका आंसर बनता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट अबाउट आर क्रिएटेड फॉर अ सिंगल वेब एप्लीकेशन? One for each servlet, one for each session, one for each request, one for the entire web application. Servlet context 4. Servlet context belong to one web application, therefore it can be used for sharing resource among servlet in the same web application. As initialization parameters for a single servlet are stored in servlet config, servlet context tag can store an initialization parameter for the entire web application. These parameters are also called context attribute and exist of the lifetime of the application. यहाँ पे देखें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 2 है। यहाँ पे यूजर है, यूजेस यहाँ पे सर्वलेट 3 होगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, तो सारे सर्वलेट जो होते हैं वो आती हैं यूजेस से आगे कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है वन फॉर द इंटायर वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सारा इसके अंदर यूज हो रहा है, तो इसका हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। It allows a servlet to forward the request to another resource
सर्वलेट JSP दिस स्टेटमेंट, फॉरवर्ड है, इंक्लूड है, बोथ फॉरवर्ड है या इंक्लूड है, नेदर फॉरवर्ड नॉर इंक्लूड। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। Characteristics of forward methods are: forwarding remains transparent to the client unlike resource send, redirect, string location है, you cannot see the changes in the URL. Request object is available to the called source है, in other words it remains in scope. Before forwarding request to another source है, header or status codes can be set but output content cannot be added. It allows a servlet to forward the request to another resource, servlet JSP or HTML file in the same servlet context. तो इसका जो आंसर हमारे पास बनता है ये फॉरवर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने सारा फॉरवर्ड का ही पढ़ा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। The object set by the setAttribute method can be accessed using dash method. Get method getAttribute string है, get request URL है, parenthesis close है, get protocol है। Get method, this method returns the name of HTTP method which was used to send the request. The two possible returning values could be get or post. Two values होती है इसकी, get and post। Get request URL है, ठीक है, parenthesis, it can be used to track the source of request. It returns the part of the request URL without query string. Next आ जाता है get attribute string है, the object set by the setAttribute method can be accessed using getAttribute method. Passing the key in the form of string as a parameter to the method will return the object associated with the particular key in the context. Pass the object into its appropriate type. तो object set by the setAttribute method जो हमारे पास है वो है object set by the attribute। setAttribute option जो हमारे पास यहाँ पे getAttribute string है, मैंने get method, get request and getAttribute तीनों ही डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनता है बी getAttribute string, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। It returns the enumerations of all available dash names that are contained in the request. Get header name है, get header name है, HTTP servlet response method है या set content type है। तो get header name को देख लेते हैं पहले। It takes a string parameter that represents the header name and returns that appropriate header. Null value is returned if there is no header exists with the specified name. HTTP servlet response method. Let's discuss some methods of HTTP servlet response class. Get header name, it returns the enumerations of all available header names that are contained in the request. तो get header name जो है यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास आता है 2, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, enumeration of all available header names। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 18। The server reads these nodes and able to recall who the client is. This statement is true है या false? Post node हमारे पास है, in order to maintain the conversational state, server puts little notes, some text value etc on the client side slides. When client submits the next form, it also unknowingly submit these little notes. Server reads these notes and able to recall who the client is. Three typically solutions come across to accomplish sessions tracking. These are cookies है, URL rewriting है, hidden files है। तो इसके अंदर जो हमारे पास नोट एबल टू रिकॉल क्लाइंट्स है, तो सर्वर रीड्स दीज नोट्स एंड एबल टू रिकॉल हु द क्लाइंट इज, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू बनती है। तो ऑप्शन जो हमारे पास 1 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। A cookies object can be created by calling an cookies constructor which takes dash string.
2 स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग है या 8 स्ट्रिंग है। सेंडिंग कुकीज टू ब्राउजर, फॉलोइंग आर सम बेसिक स्टेप्स टू सेंड द कुकीज टू द ब्राउजर क्लाइंट। जैसा कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो वो फॉरन एक आ जाती है ऊपर, आप ऐड की कुकीज को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो ये कुकीज होती हैं, ठीक है, टू ब्राउजर। तो आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आगे आप नेक्स्ट वर्क करते हैं। Create a cookies object. A cookies object can be created by calling the cookies constructor, which takes two strings, the cookies name and cookies value. Cookies C is equal to new cookies name and value, setting cookies attribute है. Before adding the cookies to outgoing header response variables, characteristics of the cookies can be set. For example, whether a cookies persist on the disk or not. 3. Place the cookies into the HTTP response. After making change to cookies attributes, the most important and unforgettable steps is to add this currently created cookies into response. If you forget this step, no cookies will be sent to the browser. तो उसका जो ऑप्शन हमारे पास बनता है which takes two strings cookies object, तुम्हारे पास इसका 2 जो ए ऑप्शन है ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। The unlike cookies state information stored in the URL is not persistent. Advantages है या disadvantages? Disadvantages of URL rewriting. What if the user bookmarks the page and the problem gets worse if server is not assigning a unique session ID? Every URL on a page which needs the session information must be rewritten each time page is sorted, which can causes computationally expensive है, can increase communication overhead है. Unlike cookies, state information stored in the URL is not persistent. This mechanism limits the client's interaction with the server to HTTP GET request. तो ये जो अनलाइक कुकीज होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर यूआरएल इज नॉट persistent, ये डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि 4 और 5 डिसएडवांटेजेस हैं, वो यहाँ पे नीचे गिवन दिए हैं, इनको भी लाजम देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज जावा प्रोवाइड फॉर सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट? सर्वलेट एपीआई है, जेएसपी एपीआई है, एचटीटीपी एपीआई है, सर्वलेट सेशन एपीआई है। So Java solution for session tracking. Java provide an excellent solution to all the problems that occur in tracking a session. The Servlet API provides several methods and classes specifically designed to handle sessions tracking. In other words, servlets have built-in session tracking. Sessions are represented by an HTTP session object. HTTP sessions tracking API built on top of URL rewritings and cookies. All cookies and URL rewriting mechanism is hidden, and most application server uses cookies but automatically revert to URL rewriting when cookies are unsupported or explicitly disabled. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास HTTP सेशंस ट्रैकिंग जो है API है, तो ऑप्शन हमारा बनता है सर्वलेट API इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 22 है विच मेथड ऑफ HTTP सेशन क्लास इज यूज्ड टू गेट द मैक्सिमम इनएक्टिव इंटरवल ऑफ अ सेशन? गेट मैक्स इनएक्टिव है, गेट मैक्स इंटरवल है, गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल है या गेट इन एक्टिव इंटरवल है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग सेशन हमारे पास है। आफ्टर द अमाउंट ऑफ टाइम सेशन गेट्स टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली, वी कैन सी इट्स maximum activation time by using get max in active interval method of HTTP session class. However, we can also terminate any existing session manually. For this, we need to call invalidates method of HTTP session class as shown below. Session points invalidate. तो हमारा जो बनता है आंसर गेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल। ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये इसका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Which method of HTTP servlet response is used to encode local URLs for sessions taking via URL rewriting? ऑप्शन 1 है इनकोड लोकल यूआरएल, इनकोड यूआरएल, या इनकोड रीडायरेक्ट यूआरएल है, या इनकोड सेशन यूआरएल है। तो इनकोडिंग यूआरएल सेंड टू क्लाइंट, तो servlet will automatically switch to URL rewriting when cookies are not spotted or disabled by the client. When session tracking is based on URL rewriting, it requires additional help from the servlet. For a servlet to support session tracking via URL rewriting, it has to rewrite encode every local URL before sending it to the client. Now see how this encoding works. HTTP servlet response providing two methods to perform encoding. String encode URL, string URL है, string encode redirect URL, string URL है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर बनता है इनकोड URL, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24। दिस मेथड रिटर्न्स द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ दिस सेशन इज कॉल्ड। गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग है, रिमूव एट्रीब्यूट स्ट्रिंग पे, या गेट आईडी है, या गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो सेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं यहाँ पे। दिस मेथड एसोसिएट्स अ वैल्यू विद द नेम। गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग है, एक्सट्रैक्ट प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू फ्रॉम अ सेशन ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न्स नल if no value is associated with the given name. Remove attribute string है, this method removes value associated with the name. Get ID है, this method return the unique identifier of this session. तो ऑप्शन हमारा जो बनता है get ID, ये इसका ऑप्शन जो 3 है, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Layers are isolated from each other to dash coupling. इंक्रीज कपलिंग, रिड्यूस कपलिंग, मिनिमम कपलिंग, या मैक्सिमम कपलिंग। लेयर्स एंड वेब एप्लीकेशंस। Normally web applications are partitioned into logical layers. Each layer performs a specific functionality which should not mix with other layers. For example, data access layer is used to interact with database, and we do not make any direct calls to database from the presentation layer. Layers are isolated from each other to reduce coupling between them but they provide interface to communicate with each other. तो हमारा जो ऑप्शन बनता है यहाँ पे reduce बनता है, layers are isolated from each other to reduce coupling between। तो ऑप्शन जो हमारे पास 2 है reduce, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 है। In the data layer, what are example of object representing real world business entity? HTML templates है, order line item है, product है, HTTP session है, user authentication token है। Presentation layer है, provide a user interface from client to interact with application. This is the only part of application visible to client है। Business layer है, business or services layers implement the actual business logics or functionality of the application. Data layer है, these layers consist of objects that represent real world business objects such as an order line item है, product and so on. It also encapsulates classes which are used to interact with the data providing services such as database, other वेब सर्वर etc। तो हमारा जो इसको करेक्ट आंसर बनता है वो ऑर्डर लाइन आइटम है, प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर। नंबर 27, all Java files into one single directory folder, it is quick dash and harmless। ऑप्शन 1 है हार्ड है, इजी है, बोथ है, नेवर हार्ड है, इजी है। पैकेजेस। Many times when we get a chance to work on a small project, one thing we intend to do is to put all Java
files into one single directory folder. It is quick, easy, and harmless. However, if our small project gets bigger and the number of files is increasing, putting all these files into the same directory would be a nightmare for us. In Java, we can avoid this sort of problems by using packages. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है इट इज क्विक, इजी या हार्मलेस। तो ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ पे है 2, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, इजी एंड हार्मलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। JSP technology enables the rapid development of web-based applications data platform dash dependent, independent या both। ऑप्शन है Java Server Page JSP, like Servlet JSP is also a specification. JSP technology enables web developers and designers to rapidly develop and easily maintain information-rich dynamic web page that leverage existing business systems as a part of the Java technology family. JSP technology enables rapid development of web-based applications that are platform-independent. JSP technology separates the user interface from content generation, enabling designers to change the overall page layout without altering the underlying dynamic content. तो यहाँ पे rapid development of web-based applications that are platform-independent। तो ऑप्शन हमारे पास जो है 2 इंडिपेंडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जावा प्लस HTML इज इक्वल टू JSP, दिस इक्वेशन इज ट्रू है या फॉल्स है। द JSP फ्रेमवर्क यूज रेगुलर HTML फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पेज, mark servlet code with special tags, entire JSP page get translated into servlet once, and servlet is what actually gets invoked for each request. The Java server page technology combined with Java code and HTML tags in the same document to produce a JSP file. तो Java plus HTML is equal to JSP। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ट्रू बनता है इक्वेशन। ओके, कंबाइंड विद जावा कोड एंड HTML टैग्स। ऑप्शन हमारे पास जो वन है ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच टेक्नोलॉजी अलाउज JSP टू बी कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट। जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन है JVM, जावा डेवलपमेंट किट है JDK, JSP कंटेनर। तो JDK की अभी असाइनमेंट आई थी, आई थिंक JDK। तो portable like servlet JSP is also a specification and follows a well standardized API. The JVM which is used to execute a JSP file is supported on many architectures and operating systems. Inexpensive, there are number of free or inexpensive web server that are good for commercial quality website. Efficient, every request for a JSP is handled by a simple JSP Java thread as JSP gets converted into servlet. Hence, the time to execute a JSP document is not dominated by starting a process. तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है करेक्ट, वो बनता है JSP कंटेनर, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। How many types of commits are possible used in JSP? कितने टाइप हो सकती हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 4 टाइप एंड 6 टाइप, बताएं जल्दी। नो commits देख लेते हैं। Commits are ignored by JSP to servlet translator. 2 types of commits are possible used in JSP. कौन कौन सी हैं? HTML commits हैं एंड JSP commits। इनको लाजमी देखिए कि बहुत कोडिंग के अंदर यूज हो रहे हैं। कोडिंग्स के मैंने MCQ नहीं दिया, आपने लाजमी कोडिंग्स को भी देख लेना, ठीक है। तो HTML commit कौन से होते हैं? These commits are showing browser means on taking view source of web page. These sort of commits can be read. Format of HTML commits is like to dash comment text, ये होता है, ठीक है।
फिर JSP कमेंट जो होता है, these कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन ब्राउजर एंड हैव फॉर्मल लाइफ, ये डिस्प्ले नहीं होता ब्राउजर के अंदर, तो ये वाला होता है परसेंटेज कमेंट टेक्स्ट एंड परसेंटेज क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेस देन के ये साइन होते हैं ग्रेटर देन लेस देन के कोडिंग के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो टू टाइप्स बनती है, HTML एंड JSP कमेंट है, टू कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 32। This page retrieves the value posted by first.jsp is known as first.jsp, second.jsp, third.jsp, या none of them. Using scripting elements, the next example code consists of two JSP pages, namely first.jsp and second.jsp. This user will enter two numbers on the first JSP and after processing the calculate sum button able to see the sum of enter number on second JSP. First JSP को देख लेते हैं। This page only display the two text field to enter numbers along with the button. Only जो text field को display कराता है वो first है। This page retrieves the value posted by first point JSP after converting number into integers and display their sums. जो कन्वर्ट करता है नंबर्स को इंटीजर्स में और डिस्प्ले करता है उनके सम को। पेज रिट्राइव हमारे पास सेकंड डॉट जेएसपी, ऑप्शन हमारे पास जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर, सेकंड डॉट जेएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। What is the type of the variable used to manipulate the response to the client in a servlet? HTTP रिस्पॉन्स है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है या सर्वलेट रिस्पॉन्स है। The three most important variable are request, response and out है, ठीक है। तीनों गिवन है, लाजमी नोट करें। This variable is of type HTTP servlet request है, associated with the request it gives you access to the request parameter, the request type, get and post है, and the incoming HTTP request headers cookie है। रिस्पॉन्स क्या है? This variable is of the type HTTP servlet response है, associated with response to client है। By using it you can set HTTP status code, content type and response header है। Out क्या है? This is the object of JSP writer है, used to send output to the client। जो आउटपुट सेंड करते हैं क्लाइंट को उसके लिए आउटपुट किया जाता है, आउटपुट, सारी सी बात है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बनता है जी ऑप्शन जो हमारे पास 2 है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 34। What is the type of the variable used to represent JSP configurations options like int parameter? सर्वलेट कॉन्फ़िग है, JSP कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग ऑप्शन है या JSP सेटिंग। 5 implicit object are given है, session है, season, this variables type of HTTP session used to work with the session object है, application है, page context है, exception है, config page है। तो इनको आपने लाजमी सबको इंक्लूड करना है। तो this variable is of type subnet config, represent the JSP configurations option int parameter etc। page है, this variable is of the type java lang object, it is synonym for this। तो हमारा जो इसका आंसर बनता है variables used to represent JSP configuration जो होता है int पैरामीटर होता है या इनिशियलाइज पैरामीटर होता है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन जो है यहाँ पे कॉन्फ़िग, सी वाला जो ऑप्शन है ना ये इसका करेक्ट आंसर। सॉरी सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑप्शन ए जो है ना सर्वलेट कॉन्फ़िग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर JSP directives used for? convey special processing information to the JSP container है, manipulating user session data है या controlling the execution flow of JSP page है, handling HTTP request and response है।
तो GSP directives है, GSP directives are used to convey special processing information about the page to GSP container. It affects the overall structure of the servlet that result from the GSP page. It enables programmer to specify page setting to include content from other sources to specify custom tag libraries. तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनता है कन्वे स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन हमारे पास जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर, कन्वे स्पेशल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जीएसपी कंटेनर। क्वेश्चन 36 है which GSP method is responsible for handling each request and generating the response? int है, इनिशियलाइजेशन है, JSP इनिशियलाइज है या JSP सर्विस है या प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखें JSP इनिशियलाइजेशन है, फिर JSP सर्विसेज है, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स वापस आता है, फिर JSP डिस्ट्रॉय। जैसे पहले भी हमने एग्जांपल देखी थी, इनिशियलाइजेशन है, फिर सर्विस आती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्स देती है, रिक्वेस्ट देते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो फंक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। तो GSP लाइफ साइकिल मेथड है। The life cycle method of GSP are GSP initialization है, GSP services है, and GSP destroy है। तो one receiving each request, GSP services method is invoked that generates the response as well। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बनता है GSP services, यहाँ पे C जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। A being class must have a dash argument constructor। 1 argument है, 2 है, 3 argument है या 0 argument। Java being design conventions। These conventions are: a being class should not have any public instance variable attributes fields है, private value should be accessed through setters and getters है। setters and getter फंक्शन अब कोड में यूज करते हैं, आपको असाइनमेंट आई थी पीछे, उसके अंदर गेटर फंक्शन यूज किया, सेटर फंक्शन यूज किया, ठीक है, ये आप फंक्शंस को यूज करते हैं। फॉर बुलियन डाटा टाइप्स यूज बुलियंस, XX सेट बुलियन है, ठीक है। बीइंग क्लास मस्ट बी सीरियलाइजेबल है। अ बीइंग क्लास मस्ट हैव अ 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कितना होता है हमारे पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बीइंग क्लास के अंदर? 0 होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 जो है 0, ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द JSP यूज बीन एक्शन एलिमेंट? ऑप्शन ए है हमारे पास टू क्रिएट अ न्यू जावा बीन ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग जावा बीन ऑब्जेक्ट है, सी ऑप्शन है टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ जावा बीन ऑब्जेक्ट है, और डी है टू डिफाइन अ न्यू वेरिएबल इन द JSP पेज। JSP use bean action element. It is used to obtain a reference to an existing Java bean object by specifying ID, name of object, and scope in which bean is stored. If a reference is not found, the bean is initiated. The format of this action element is JSP use bean ID name. Scope है हमारे पास पेज, request sessions, applications, class packages, dot class, और इसको हमने सेमीकोलन लगा के लेस देन का साइन लगा के ग्रेटर देन का क्लोज कर दिया ये कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका करेक्ट आंसर बनता है टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग जावा बीन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कस्टम टैग कैन बी कस्टमाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट स्टेटमेंट इज। एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है, ये जो स्टेटमेंट है कैन बी कस्टमाइज्ड, विद कस्टम टैग में एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है। टाइप्स ऑफ टैग्स, 3 टाइप्स ऑफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड, दीज आर सिंपल टैग, टैग विद एट्रीब्यूट, टैग विद बॉडी। 3 तरह के टैग होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कस्टम टैग: प्रोवाइड्स क्लीनर सेपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन एंड जावा बीन, have access to all JSP implicit object like out request, can be customized by specifying attribute.
तो अगर आपसे वो टाइप्स पूछ लेता है तो आप टाइप्स बता सकते हैं। सिंपल टैग्स को आपने देखना, डिफाइन में टैग एट्रीब्यूट है, टैग विद बॉडी है, फिर नीचे इसके एडवांटेजेस हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। कैन बी कस्टमाइज स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। तो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मस्त सब्सक्राइब करें, वीडियो को आदमी शेयर करें, क्योंकि बहुत एफर्ट होती है वीडियो के ऊपर, फिर ये वीडियो बनती है, ऐसी वीडियो नहीं बनती, ठीक है। तो हम इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास। दिस पेज डैश पर्सन नेम फ्रॉम सर्च पर्सन डॉट जेएसपी टू सर्च इन, सेंड है, रिसीव है, बोथ या नन ऑफ देम। जावा सर्वर पेज है add person.jsp used to collect new person information that will be saved in database। ओके, save person JSP के अंदर क्या होता है, receive person info from add person JSP, save it to database। तो save person के में क्या करेगा, वो यही होगा कि वो डाटा लेगा और उसको सेव कर देगा। सर्च person used to provide search criteria to search person info by providing name। show person.jsp, this page receive person name from search person to search in database, retrieves and display person report found against person name। तो ये रिसीव करेगा, ठीक है, पर्सन का नेम, उसको सर्च करेगा और उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमारे पास क्या है, द पेज नेम फ्रॉम द सर्च पर्सन टू सर्च इन। तो ऑप्शन हमारे पास जो बनता है द पेज रिसीव पर्सन, सॉरी, तो यहाँ पे रिसीव टू इसका करेक्ट आंसर है। वो पर्सन की नेम को रिसीव करेगा और फिर उसको सर्च करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। विच पेज सेंड द सर्च क्राइटेरिया नेम टू शो पर्सन जेएसपी। सर्च पर्सन जेएसपी है, शो पर्सन जेएसपी है, या पर्सन डीए हुआ है या नन ऑफ अबव है। शो पर्सन JSP, show person receive search criteria name from the search person that is entered by the user to find the matching code। This page retrieve the complete list of matching code from the database using person DAO and show them to the user। तो यहाँ पे देखें, the following figure give you the site when person name saw the search। साथ को वो सर्च कर रहा है, एड्रेस को उसके पास है, ठीक है। फॉलोइंग रिजल्ट मीट यू रिसर्च क्राइटेरिया, नेम साथ उसने सर्च किया है, फिर उसका एड्रेस पता किया उसने क्या है, वो गुरबत में रहता है, फिर उसका फ़ोन नंबर जो होगा वो है, फिर उसको ऐड पर्सन और सर्च पर्सन किया। तो इस तरह ये इसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे शो पर्सन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है सर्च पर्सन डॉट JSP। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 42। What types of HTTP requests are commonly used to interact with the controller in a web application? Put and delete, post and get, update and select, add and remove। तो participant and responsibility, the individual responsibility of three participants, model है, view controller है, is given below। मॉडल है, ठीक है, व्यू एंड कंट्रोल, तो तीनों को डिफाइन किया हुआ हमने, ठीक है। द मॉडल रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ कंपोनेंट, इट्स डाटा एंड द मॉडल रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट्स इट इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द कंपोनेंट इज व्यू आर रेंडर्ड। व्यू है, द व्यू रेंडर्ड द कंटेंट ऑफ अ मॉडल एंड स्पेसिफाइज हाउ द डाटा शुड बी प्रेजेंटेड। कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पे, द कंट्रोलर ट्रांसलेट्स interactions with the view into actions to be performed by the model in a web application। They appears as get and post HTTP request। तो यहाँ पे get and post का पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन हमारे पास जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है, पोस्ट एंड गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43। Which approach is generally followed to get started with deploying web application using JSP? मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC अप्रोच, पेज सेंटर्ड अप्रोच है, जावा सेंटर्ड अप्रोच है, या व्यू कंट्रोलर मॉडल है VCM अप्रोच है। तो MVC स्टैंड पर, VCM स्टैंड पर, को भी याद रखें।
तो पेज सेंटर्ड अप्रोच हमारे पास a web application that is collection of JSP. Generally, this approach is followed to get started with developing web application. The page-centered application has a lot of drawbacks, such as the code becomes a mixture of presentation, business, and data access logic. The maintenance and upgradations of applications becomes a nightmare. Scaling of such kind of application is also difficult, and lot of code is also get duplicated. तो हमारा इसके अंदर जो ऑप्शन बनता है वो पेज सेंट्रिक अप्रोच है। तो यूजर है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यूजर जो होता है वो रिक्वेस्ट देता है जेएसपी की तरफ, तो जो जेएसपी है वो रिस्पॉन्स देता है यूजर को। ओके, फिर अगर जेएसपी से डेटाबेस की तरफ जाते हैं, वो डेटाबेस से अगेन जेएसपी, और जेएसपी से यूजर की तरफ रिस्पॉन्स आता है। पहले जो यूजर होता है वो कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है जेएसपी को, फिर डेटाबेस की तरफ जाते हैं, डेटाबेस से उसका जो आंसर होता है, जो सर्च होती है, वो अगेन जेएसपी, और जेएसपी से यूजर की तरफ रिस्पॉन्स आता है। तो ऑप्शन हमारे पास तो यहाँ पे बनता है बी, पेज सेंट्रिक अप्रोच, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। द रिप्रेजेंटेशन फिजिकल व्यू एप्लीकेशन इज नोन एज, लेयर है, टायर्स है, डाटा लेयर है, बिजनेस लेयर है। लेयर वर्सेस टायर्स। टायर्स, layers are merely logical grouping of software components that makes up the applications or services, whereas tiers refer to the physical residence of those layers. Layer represent the logical view of application, वो layer है हमारे पास। represent physical view of application, tiers। तो represent physical view application पूछा गया है, तो ये हमारे पास tiers ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है। What is the primary responsibility of the data layers in a system? Managing user interface and user interaction है, handling data retrieval and storage logic है, controlling the flow of the application है, या managing the system hardware and network resource है। तो presentation layer है, business layer है, and data layer है। तीनों को आपने रीड आउट करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तीनों मैंने यहाँ पे बता दी, presentation, business and data layer। तो हमारा इसके अंदर जो ऑप्शन बनता है डाटा लेयर को देख लेते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द डाटा एंड डाटा सोर्स ऑफ द सिस्टम। डाटा सोर्स कैन बी database, XML, web services, flat file, encapsulates data and retrieval, storage logic, for example, address book application need to retrieve all personal record from the database to display them to the user। तो ऑप्शन हमारे पास जो बनता है 2, हैंडलिंग डाटा रिट्राइवल एंड स्टोरेज लॉजिक, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इनकैप्सुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, दी एंड और नोट दिस ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन EL एक्सप्रेशन। तो ये अरिथमेटिक है, ग्रुपिंग है, या लॉजिकल है, या एम्पटी। तो EL ऑपरेटर, द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड इन EL एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। तो ये टेबल है, टेबल को आपने अच्छी तरह से इनपुट करना है, क्योंकि टेबल के अंदर सारी वैल्यूज गिवन है, इनमें से कोई भी MCQ आ सकता है, ठीक है। अरिथमेटिक है, उसको हम किस ऑपरेटर के जरिए शो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिव होता है, परसेंटेज, मोड। फिर ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस, क्लोज है, ठीक है। लॉजिकल जो है उसको किस हम ऑपरेटर से शो करते हैं, डबल एंड होता है, ठीक है, एंड होता है, फिर सेमीकोलन, पैरेंथेसिस, ये और होता है, ठीक है, लिखा, फिर नोट होता है, ये निशान होता है, ठीक है, ये वाला। तो रिलेशनशिप है, इज इक्वल टू, फिर इम्पटी है, फिर कंडीशन, कंडीशन के लिए ये साइन होता है, ये सिंपल जो क्वेश्चन मार्क होता है, और जो आगे कॉलम होते हैं। तो इस टेबल को अच्छी तरह से आप इनपुट करना है, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमारा ये पूछा गया था, वो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछी गई थी एंड वाली, नोट और वाली, तो ये हमारे पास लॉजिकल बनता है। ऑप्शन जो 3 है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। We contain tags to support local messages, text numbers and date formation। This statement is XML manipulation है, core है, SQL है, या internationalization and formatting है। तो it is actually composed of 4 separate tag libraries। core है हमारे पास, contain tags for condition, control flow and to access variable है, XML manipulation,
SQL है और internationalization and formatting. Contain tags to store local messages, text number and data formation. तो ऑप्शन हमारे पास जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 48. You can safely display only dash error at a time and focus on the wrong field. 1, 2, 3 and 4 error. कितने error हो सकते हैं इसके अंदर? So there are 2 good reasons to use client-side validation. It is fast from validation. If something wrong, the alarm is triggered upon submission of the form. You can secretly display only one error at a time and focus on the wrong field to help ensure that the user correctly fills in all the details with need. तो ऑप्शन हमारे पास जो बनता है वन एरर, एक एरर शो होता है. तो ऑप्शन हमारे पास है वन, ऊपर वाला वन इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. GSP स्टैंड फॉर. चलो बताएं, आपको पता होगा, मैंने पहले कितनी दफ़ा बता दिया, तो मैंने चलो ये भी दे दिया आपको. मतलब क्वेश्चन बताएं कौन से, क्या स्टैंड फॉर होता है इसका. जावा सर्विस फेसिस है, जावा सर्वर फेसिस है, या जावा सर्वर फंक्शन है, या ऑल ऑफ दीज है. तो JSF जावा सर्वर फेसिस ये इसका आंसर है. इसका डिफाइन भी आपने देख लेना. नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है. According to W3C, a web server is a dash application. सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है एंड बोथ मैनेजमेंट. और ये लास्ट क्वेश्चन है. तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी एफर्ट होती है इस वीडियो के ऊपर. तो लाजमी सब्सक्राइब करें. बहुत हार्ड वर्किंग के बाद ये वीडियो हम बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ठीक है. और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें. कोई क्वेश्चन के बारे में डिटेल चाहिए हो, कोई भी बात हो, लाजमी नीचे कमेंट कर सकते हैं. ओके. तो वेब सर्विस डेफिनेशन बाय W3C जो होता है, TC recently has become up with the decent definition of web service. According to W3C, a web service is a software application identified by a URI whose interface and binding are capable of being defined, described, and discovered by XML artifacts and supports direct interaction with other software applications using XML-based messages via internet-based protocol. तो इसका जो ऑप्शन बनता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे पास, ठीक है जी. और ये 50 मिनट की वीडियो बनाते बनाते ना गला सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, बहुत एफर्ट लगती है, ठीक है. तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.